To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to holy gurus, saints, to all the angels of knowledge, wisdom, to my soul, to all the participants, your souls. We humbly invoke your divine guidance, divine help, and divine blessing in understanding this book, in understanding the sutras, the formulas, and the teachings, the priceless teachings mentioned in the book. We understand it, we use it in our life, we put it into practice, we remember when we need it with thanks and in full faith. So be. Good evening, people, and welcome to session 2 of The Monk Who Sold His Ferrari. So here's something I would like to share with you. How is our session 2 going today? Okay. So I hope my screen is visible. So it's not a proper presentation, but just something to, see. So the monk who sold his Ferrari, session 2. How it is going to be? What is the flow of the session? We did invocation. We are going to do a small, quick recap. Okay. Of the session. Give me a second, please. Let me. Yes. So then we are going to have a small recap of session 1, then action for the week quickly. Okay. In, not more than say 2 minutes, 90 seconds you share. If you have done the action for the week, then we are starting our session 2 reading. Again, we'll have discussion and takeaways and action for week 2. Okay. So let's begin with the recap. So what did we see in the book first? We saw that the praise for the book, The Monk Who Sold His Ferrari, the praise was by different authors, the author of Alchemist, the author of Chicken Soup for the Soul, because they said it's a captivating story and it teaches us as it delights. So it's a very delightful story. मतलब एक बड़ा मजा आएगा. जैसे कि हम एक सस्पेंस मूवी देखते हैं ना, आगे क्या हुआ, अरे अब क्या हुआ. तो पढ़ते पढ़ते जैसे मैंने कहा ये बुक दूसरे बुक से डिफरेंट कैसे है, दूसरी सेल्फ हेल्प बुक क्या होती है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, डू दिस डू दैट, तो बोर हो जाता है थोड़ा बहुत. ये कहानी के माध्यम से बहुत ही प्यारे कैप्टिवेटिंग रूप में ये हमें लेसन्स दिए गए हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था फोरवर्ड. ओके. फोरवर्ड में राइटर ने बताया बड़े हम्बली, करेक्ट, कि उन्होंने कैसे ये बुक शुरू की. ही इज वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस दैट वी हैव द करेज टू पिक दिस बुक. ओके. अभी इसने ऐसे क्यों बोला है हम आगे देखते हैं. तो ही सेज दैट ही वाज वेरी no, sorry. हाँ, so personal forward, he says that he was a successful but very unhappy litigation lawyer. Okay. And then he gives us the story of Julian Mantel. Julian Mantel की तरह ये भी एक ऐसे ही लॉयर थे, सक्सेसफुल बट वेरी अनहैप्पी. और उन्होंने कहा है कैसे उन्होंने ये जब उन्होंने उनको मंत्रा मिल गया अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, तो उन्होंने ये बुक में डाला. प्रैक्टिसेस है, टूल्स है, इसमें टूल्स समझते हो, टेक्निक. जैसे ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एक टेक्निक है करने की, तो वैसे इसमें टेक्निक्स हैं सक्सेस के, हैप्पीनेस के और लास्टिंग पीस के. फिर उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने बड़ी हम्बल स्टार्ट करी थी. सिर्फ 100 कॉपीज ये बुक के उन्होंने पब्लिश किए थे. उनके मम्मी पापा ने उनको हेल्प किया था इसको सेल करने में अपनी गाड़ी के पीछे से. हर हिज मदर वाज द एडिटर, फादर वाज हेल्पिंग हिम टू सेल द कॉपीज. तो बड़ा हम्बल स्टार्ट. लेकिन राइटर यहाँ पर कहते हैं कि जब हम डेयरिंग करते हैं ना कुछ करने की, तो यूनिवर्स आपको साथ देता है. ओके. द लाइन हियर वाज लाइफ एनकरेजेस दोज हु डेयर. ओके. तो यहाँ पर एक्शन ऑफ द वीक आया था हमारा कि कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो जगह हैं, इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जहां आपने डेयर किया था एंड लाइफ सपोर्टेड यू. सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट एंड एक्नॉलेज योरसेल्फ. फिर आगे हमने देखा राइटर्स होप फॉर द रीडर्स व्हाट ही वांट्स फॉर अस. वो भी जानना बहुत जरूरी है कि जब राइटर लिख रहा है तो वो क्या चाहता है हमसे. तो राइटर हमसे चाहता है, वो हमारे लिए चाहता है कि वी अवेकन अवर बिगनेस.
वी मैनिफेस्ट अवर ग्रेटनेस। ठीक है, तो एवरीबडी इज ग्रेट। हम क्या करते हैं कि मैंने एक कार मैनिफेस्ट किया, मैंने 40,000 का चेक मैनिफेस्ट किया, गुड। लेकिन जब आप अपने अंदर की महानता, आप बोलोगे महान, हाँ, हम बोलते हैं हम तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन हर एक उस देव भगवान के अंश से आए हुए हैं, तो सभी के अंदर वो क्वालिटीज हैं। व्हेन यू मैनिफेस्ट योर बिगनेस, यू एक्सपीरियंस आउटराइट फियरलेसनेस। ये बहुत जरूरी है। आउटराइट फियरलेसनेस, हम दिखाते हैं कि हम बहादुर हैं, पर अंदर हम डरते हैं। ये सोनू सभी लोग। और मुझे तो लगता है मैं बहुत डरपोक हूँ, आई एक्नॉलेज दैट। लेकिन और डरपोक होने में कोई बुराई नहीं है, इट्स ऑल राइट। लेकिन जब आपको पता चलता है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, पर इट्स ओके, फिर भी आप एक्शन लेते हो, दैट इज करेज। नॉट स्टॉपिंग बाय योर फियर। ओके, दैट्स इट। एंड टू लिव अ लेजेंडरी लाइफ, दीज आर राइटर्स रॉबिन शर्मा's होप फॉर द रीडर्स। चैप्टर 1 में हमने देखा, अब चैप्टर 1 का रिकैप करेंगे हम। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि कैसे खचाखच भरी हुई कोर्ट का सीन है, पब्लिक फुल भरी हुई है, और एक अपने जो हीरो है जूलियन मेंटल, एकदम ही सक्सेसफुल कामयाब लॉयर, और वो ढह जाते हैं, मीन्स ही कोलैप्सेस, गिर जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है। और जो राइटर है, नरेटर है इस वक्त, वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये इसको क्या हो गया वहां। ठीक है, और बहुत ही प्रख्यात वकील है, बेहद कामयाब है, उनके पास बेशुमार सफलता है, उन्होंने हासिल की है, बहुत बड़े बड़े केसेस लड़े हैं उन्होंने, उनके पास फर्रारी गाड़ी है, मनपसंद घर है, हर वो चीज है, जितना चाहिए उतना पैसा है उनके पास। लेकिन राइटर कहते हैं कि फिर भी ऐसे लग रहा है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज रनिंग रनिंग रनिंग। तो राइटर देख रहे हैं, और राइटर कहते हैं सरफेस से तो सब कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है, लेकिन राइटर देख रहे थे कुछ संकट की परछाई, कुछ संकेत आ रहे हैं कि कुछ संकट आने वाला है। क्योंकि जूलियन मेंटल जिस तनाव से गुजर रहे थे, हर केस की वो इतनी ज्यादा तैयारी करते, इतनी ज्यादा स्ट्रेस में रहते, और हर एक केस पिछले वाले केस से ज्यादा चैलेंजिंग हुआ करता था। ठीक है, सो वी स्टॉप हियर एट द पेज नंबर 5। So there we were, two slaves to the clock, toiling on the 64th floor of some steel glass monolith, while most sane people were at home with their families. तो लोग अपने अपनी families के साथ enjoy कर रहे थे, लेकिन ये दो बंदे, राइटर और हमारे कैरेक्टर जो है, मेन हीरो है जूलियन मेंटल जो है, वो एक वही बिल्डिंग में 64th फ्लोर पे बैठ के एक अपना काम कर रहे हैं वहां पर। वी हैड, व्हाट डज ही से, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग वी हैड द वर्ल्ड बाय द टेल, ब्लाइंडेड बाय एन इल्यूजरी वर्जन ऑफ सक्सेस। तो इस पर अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो अब आई, हाँ, ये हमारे एक्शन फॉर द वीक थे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास। ठीक है, ऐसे मैं बोलूंगी तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो पहला वाला था, वेर इन लाइफ डू यू हैव यू डेड, डिड लाइफ एनकरेज यू, रिकॉल एंड एक्नॉलेज योरसेल्फ। उसके बाद था, राइट एन एक्नॉलेजमेंट टू द बुक ऑफ द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप अपनी कहानी लिखते हो अपनी जिंदगी की, तो उस कहानी में आप एक्नॉलेजमेंट किस किस को दोगे, बुक की एक्नॉलेजमेंट। ओके, और दूसरा है, आपका सक्सेस का वर्जन क्या है, आप कब बोलोगे कि मैं कामयाब हो गई या आई एम सक्सेसफुल, क्या चीजें होंगी आपके पास, ये आपको दिखना लिखना है। एंड हु आर योर निग्लेक्टेड फ्रेंड्स, डिड यू कनेक्ट विद देम, शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके, सो दिस वाज एक्शन फॉर द वीक। नाउ वी विल स्टार्ट। तो 1 सेकेंड, स्क्रीन, यस। तो चलिए, ये अपना अब हम जाते हैं quickly. Can we share from the action of the week first quickly? If anybody has done it, then we can go ahead. Yeah, let us keep the sharing in the last. Yes, Savita. I'll ask you to unmute. Yeah. लास्ट और नाउ? लास्ट वाला। हाँ, पर अभी तो अभी मैं करूँ दूंगी ना। शेयरिंग? शेयरिंग करूँ हाँ, ना? हम्म।
हाँ So, हाँ कर my first assignment was कि भाई, I dared to do something like I would have lost my real house in Linking Road, and that's my, it has more emotional value. Of course, पैसे की भी value है, पर मैंने बहुत daring से उसको रेनोवेट करने लिया बिकॉज काफी डिलैपिडेटेड हो गया था वो। मेरे को ऑटोमेटिकली वहां अलाइनमेंट मिला कि आई हैव फाउंड सम फ्रेंड्स हु वर इंटीरियर डिजाइन कॉन्ट्रैक्टर्स। So, yeah, I will tell you that we'll be very brisk, 90 seconds. Okay. So, next time when you come, you will plan how you're going to say action for the week because these are recordings. People who don't join may watch it. So, it should go brisk for them. Okay. So I got the friend circle who was doing that. I got the tenant without a broker very quickly, put it on rent, and then we could get, we could pay off the dues. Beautiful. So, this, you experience that when you dare, life supports. Yes. Yes. Thank you. Thank ओके यस चलिए अब आज का हम सेशन नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट रीडिंग इज द स्क्रीन देयर आई डोंट नो ओके हमने फिलहाल रीडिंग फ्रॉम द बुक और सेकंड या द वेकअप कॉल ना so the first chapter the wake up call we are on page number 5 okay and see if you can see here हाँ ये है आप version of success ठीक है I don't know you can zoom the screen and you can see okay चलिए the more time I spent with Julian, the more I could see that he was driving himself deeper into the ground. It was as if he had some kind of a death wish. Nothing ever satisfied him. Eventually, his marriage failed. He no longer spoke with his father, and though he had every material possession anyone could want, he still had not found whatever it was that he was looking for. It showed emotionally, physically, and spiritually. तो राइटर कह रहे हैं कि जूलियन ने जितना समय उन्होंने जूलियन के साथ जितना समय बिताया वो जान पा रहे हैं कि वो ऐसे यू बिहेव एज इफ कि बहुत एक होड़ में लगे हैं सब कुछ था उनके पास फिर भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड करेक्ट और ये दिखाई दे रहा था देखिए एक संतुष्ट बंदे का चेहरा और एक स्ट्रगलिंग बंदे का चेहरा अब इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना पैसा है या कितने मटेरियल थिंग्स इट इज ऑल अबाउट योर समझो समथिंग इनर थिंग ओके अब ये क्या है देखिए तो ये कहते हैं इट शोड फिजिकली इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एट 53 years of age जूलियन की एज 53 थी but he looked as if he was in his late 70s. Okay. His face was a mass of wrinkles, a less than glorious tribute to his take no prisoners approach to life in general, and the tremendous stress of his out of balance life in particular. The late night dinners in expensive French restaurants, smoking thick Cuban cigars, and drinking cognac after cognac had left him embarrassingly overweight. He was constant he constantly complained that he was sick and tired of being sick and tired. He had lost his sense of humor and he never seemed to laugh anymore. तो देखिए दोस्तों जब पैसा आता है ना तो हमें ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं उस पैसे से ठीक है तो कभी ट्राई करके देखिए ऐसा when money starts coming or you observe rich people means not born rich but who start earning more the first thing they do is they raise their standard of living है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देते हैं फिर क्या होता है you see them that they become overweight first thing they don't have time to exercise राइट तो ज्यादा समय जो पैसों के पीछे भागोगे सेम थिंग हमारे जूलियन मेंटल के साथ हुआ है और वो खुद बोल भी रहा है कि यार टाइम इन लाइफ में भाग ही रहे हैं देयर इज नो टाइम इन लाइफ और हम भाग ही रहे हैं और भाग भाग के भी थक गए हैं कई बार हमें भी ऐसे लगता है कि जिंदगी के ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं और एक बार चढ़ गए ना तो लगता है रुकना मुश्किल है राइट बहुत बार सोचते हैं कई कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि चलो रिटायरमेंट ले लेते हैं चलो अब बस करते हैं चलो अब नहीं
but still you go on and on and on many times. Or there may be many things which you are thinking that you will stop. अब से नहीं, चलो अब ये वाला बंद कर देते हैं, अभी चलो ये काम नहीं करते, या ये नहीं, बट ये होता नहीं है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। ये कह रहे हैं कि जूलियन का जीवन जो है बिल्कुल असंतुलित था, इम्बैलेंस था, तनावपूर्ण था। और कैसे मालूम पड़ता है? फिजिकली वो बहुत बूढ़ा दिख रहा था, 70 ईयर ओल्ड, जबकि 53 था। ही हैड स्टॉप्ड लाफिंग, ये इमोशनल हेल्थ का साइन है। करेक्ट, इमोशनल हेल्थ का साइन है, ह्यूमन होने का साइन। ह्यूमर जो है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, एक इंसान होने का प्रतीक है। देखिए, एनिमल्स, बर्ड्स, बाकी कोई भी जीव को ये कैपेसिटी, ये पावर नहीं है हंसने का, इंसानों को है। तो यहाँ पर आपका एक्शन ऑफ द वीक आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू लाफ इन अ डे? Correct. So as I had suggested, please make a separate notebook or a separate diary, correct, for this book, where you'll put the date and you'll write down any one line which might have, caught your attention. ये जो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों की दृष्टिकोण से भी आप लिख सकते हो, आपकी कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी है। तो यहाँ पर मुझे एक एक्शन ऑफ द वीक आपको ये देना है, आपको नोटिस करना है, आप दिन में कितने बार हंसते हो। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। करेक्ट, जितनी बार भी आप हंसते हो, आपने नोटिस किया कि पूरे दिन भर में 2 ही बार हंसी, या 3 ही बार हंसी, या 1 ही बार हंसी, इंक्रीज इट बाय 50%। इंक्रीज इट। करेक्ट, अब कैसे इंक्रीज करोगे? वॉच मूवीज, वॉच कार्टून्स, बी विद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल मेक यू लाफ। और बेस्ट पार्ट इज जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑब्जर्विंग पीपल। व्हेन यू आर वेटिंग, जस्ट ऑब्जर्व पीपल। Like that will, I mean, that makes me laugh, not at their miseries or problems, but sometimes they behave in a funny way, तो हंसी आती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। दिस इज एक्शन फॉर द वीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। We are on page number 6. Julian's once enthusiastic nature had been replaced by a deathly somberness. अचानक से हम सीरियस हो जाते हैं, ऐसे जूलियन हो गया। Personally, I think that his life had lost all purpose. Perhaps the saddest thing was that he had also lost his focus in the courtroom, where he would once dazzle all those present with an eloquent and airtight closing argument. Now he droned on for hours, rambling about obscure cases that had little or no bearing on the matter before the court. Where once he would react gracefully to the objections of opposing counsel, he now displayed a biting sarcasm that severely tested the patience of judges who had earlier viewed him as a legal genius. Simply put, Julian's spark of life had begun to flicker. तो जहां पहले जजेस ने देखा था उसे इतने अच्छे से केस लड़ते हुए, अब वो कितने उम्दा आर्ग्यूमेंट्स देता था, अब वो बेतुक की बातें गोल 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 करे। तो जजेस के भी पेशेंस ये हो जाता था टेस्टेड कि अरे बाप रे, क्या बेतुकी की बातें कर रहा है ना, बीइंग अ लॉयर। सो द इम्पैक्ट वाज सीन इवन इन हिज वर्क, ये बताना चाह रहे। इट वाज जस्ट it wasn't just the strain of his frenetic pace that was marking him for an early grave. I sensed it went far deeper. It seemed to be a spiritual thing. Almost every day, he would tell me that he felt no passion for what he was doing and was enveloped by emptiness. Julian said that as a young lawyer, he really loved the law, even though he was initially pushed into it by the social agenda of his family. The law's complexities and intellectual challenges had kept him spellbound and full of energy. Its power to effect social change had inspired him and motivated him. Back then, he was more than just some rich kid from Connecticut. He really saw himself as a force for good, an instrument for social improvement who could use his obvious gifts to help others. That vision gave his life meaning. It gave him purpose and it fueled his hopes. तो ये ऐसा नहीं था जब वो युवा था, यंग था, तब उसमें बहुत जोश था। भले ही वो बिल्कुल समृद्ध फैमिली से था, पैसे वाली फैमिली से था, उसकी फैमिली भी
लॉयर्स लीगल इसको बिलोंग करती थी। लेकिन उस वक्त उसे ऐसे था कि जो उसे गिफ्ट मिला है ये, वो उसे समाज को सुधारने के लिए, दूसरों को वर्ल्ड को बेटर करने के लिए यूज कर सकता है, इसलिए उसके पास वो स्पार्क थी। लेकिन अब वो स्पार्क जो है फ्लिकर हो रही थी, छोटी बुझती जा रही थी। सो एक्शन फॉर द वीक हियर, सेकेंड वन, चेक योर स्पार्क ऑफ लाइफ। Check your spark of life. Now, what do I mean by check your spark of life here? कि जब आप युवा थे, क्या स्पार्क था, क्या आपको जिंदा रखता था, क्या आपके सपने थे, जिससे आपको बड़ा मजा आता था, मोटिवेशन आता था, आप आगे बढ़ते। ठीक है, अब वो स्पार्क कहाँ तक जिंदा है? आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He says that there was even more to Julian's undoing than a rusty connection to what he did for a living. He had suffered some great tragedy before I had joined the firm. Something truly unspeakable had happened to him, according to one of the senior partners. But I couldn't get anyone to open up about it. Even old man Harding, the notoriously loose lipped managing partner who spent more time in the bar of the Ritz Carlton than in his embarrassingly large office, said that he was sworn to secrecy. Whatever this deep, dark secret was, I had a suspicion that it, in some way, was contributing to Julian's downward spiral. Sure, I was curious, but most of all, I wanted to help him. He was not only my mentor, he was my best friend. तो राइटर कहते हैं कि कुछ तो था, मतलब ये सिर्फ तनाव नहीं था जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, कुछ तो उसकी लाइफ में एक सीक्रेट था, कोई ट्रेजेडी हुई थी उसके साथ जिसकी वजह से ये डाउनफॉल हो रहा था। और राइटर बहुत क्यूरियस था जानने के लिए, और उनके एक मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर, करेक्ट, जिसको उन्होंने लूज लिप्ड कहा है, मीन्स वेरी इजीली जो बोल देते हैं, सीक्रेट्स नहीं रखते, उन्होंने भी ये सीक्रेट राइटर को नहीं बताया, ये सीक्रेट कि जूलियन के साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी। एंड देन इट हैपेंड, ओके, या, and then it happened, and then it happened, this massive heart attack that brought the brilliant Julian Mantle back down to earth and reconnected him to his mortality. Right in the middle of the courtroom number 7 on a Monday morning, the same courtroom where he had won the mother of all murder trials. तो ये कोर्टरूम में ये जो हार्ट अटैक आ गया था, वो उसे वापस जमीन पर लेके आ गया। चैप्टर 2 शुरू करते हैं, द मिस्टीरियस विजिटर। इट वॉज एन emergency meeting of all the firm's members. As we squeezed into the main boardroom, I could tell that there was a serious problem. Old man Harding was the first to speak to assembled mass. तो एक मीटिंग चालू थी, इमरजेंसी मीटिंग, ठीक है, जहां सब लोग बैठे थे इनके ऑफिस में। I'm afraid I have some very bad news. Julian Mantle suffered a severe heart attack in court yesterday while he was arguing the Air Atlantic case. He is currently in the intensive care unit, ICU में है, but his physicians have informed me that his condition has now stabilized and he will recover. However, Julian has made a decision, one that I think you all must know. He has decided to leave our family and to give up his law practice. He will not be returning to the firm. I was shocked. इतना सक्सेसफुल नामी वकील जिसे एकदम से हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने डिसीजन लिया वहीं पर आईसीयू में कि अब के बाद वो कभी भी वापस ज्वाइन नहीं करेंगे कंपनी को, करेक्ट। और राइटर वाज शॉक्ड. I knew he was having his share of troubles, but I never thought he would quit. My screen is visible? Somehow I have. Just give me a second.
Yes, let's begin. So he says that I was shocked. I knew that he has his share of troubles, but I never thought he would quit. As well, after all that we had been through, I thought he should have the courtesy to tell me this personally. He wouldn't even let me see him at the hospital. Every time I dropped by, the nurses had instructed to tell me that he was sleeping and could not be disturbed. He even refused to take my telephone calls. Maybe I reminded him of the life he wanted to forget. Who knows? I will tell you one thing though, it hurt. राइटर को बहुत दुख हुआ कि उसके मेंटर, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया हॉस्पिटल में और उसने ये ऑफिस और सारा लीगल जो है इतना साम्राज्य उसने खड़ा किया था सब छोड़ दिया. That whole episode was just over 3 years ago. Last I heard, Julian had headed off to India on some kind of an expedition. He told one of the partners that he wanted to simplify his life and that he needed some answers and hoped he would find them in that mystical land. He had sold his mansion, his plane, and his private island. He had even sold his Ferrari. Julian mental as an Indian yogi, I thought. The law works in the most mysterious of ways. तो राइटर यहाँ कहते हैं कि उन्होंने 3 साल पहले सुना था कि जूलियन सब छोड़ छाड़ कर इंडिया चला गया है सब बेच बाच के ठीक है. As those 3 years passed, I changed from an overworked young lawyer to a jaded, somewhat cynical older lawyer. My wife Jenny and I had a family. Eventually, I began my own search for meaning. I think it was having kids that did it. They fundamentally changed the way I saw the world and my role in it. My dad said it best when he said, John, on your deathbed, you will never wish you spent more time at the office. So I started spending more time, a little more time at home. I settled into a pretty good, if ordinary, existence. I joined the Rotary Club and played golf on Saturdays to keep my partners and clients happy. But I must tell you, in my quiet moments, I often thought of Julian and wondered what had become of him in the years since we had unexpectedly parted company. Perhaps he had settled down in India, a place so diverse that even a restless soul like his could have made it his home. Or maybe he was trekking through Nepal, scuba diving off the Caymans. One thing was certain, he had not returned to the legal profession. No one had no one had received even a postcard from him since he left for his self-imposed exile from the law. A knock on my door about 2 months ago offered the first answers to some of my questions. I had just met with my last client on a grueling day when Genevieve, my brainy legal assistant, popped her head into my small, elegantly furnished office. There's someone here to see you, John. He says it's urgent and that he will not leave until he speaks with you. I am on my way out the door, Genevieve. I replied impatiently. I'm going to grab a bite to eat before finishing off the Hamilton brief. I don't have time to see anyone right now. Tell him to make an appointment like everyone else and call security if he gives you any more trouble. But he says he really needs to see you. He refuses to take no for an answer. तो कोई विजिटर आया है मिलने और वो बिल्कुल ही जाने से मना कर रहा है बिना मिले. For an instant, I considered calling security myself, but realizing that this might be someone in need, I assumed a more forgiving posture. Okay, send him in, I retreated. I probably could use the business anyway. The door to my office opened slowly. At last, it swung fully open, revealing a smiling man in his mid 30s. ठीक है 31 32 35 के करीब का एक व्यक्ति सामने खड़ा था. He was tall, lean, patla, and muscular, radiating an abundance of vitality and energy. He reminded me of those perfect kids
I went to law school with, from perfect families with perfect houses, perfect cars, and perfect skin. But there was more to my visitor than his youthful good looks. An underlying peacefulness gave him an almost divine presence. And his eyes, piercing blue eyes that sliced clear through me like a razor meeting the supple flesh of a fresh faced adolescent anxious about his first shave. Another hotshot lawyer gunning for my job, I thought to myself. मतलब मुझे लगा कोई और एक कंपिटेंट आ गया है लॉयर के पोस्ट के लिए, ओके, जगह के लिए, ऐसे उसे लगा. Good grief. Why is he just standing there looking at me? I hope that wasn't his wife I represented on that big divorce case I won last week. Maybe calling security wasn't such a silly idea after all. तो राइटर के मन में विचार आते हैं कि मुझे सिक्योरिटी को बुला लेना चाहिए था. कहीं ये वो पुराने क्लाइंट का पति तो नहीं है जो उन्होंने डिवोर्स केस लड़ा था. ओके. The young man continued to look at me, much as the smiling Buddha might have looked upon a favored pupil. After a long moment of uncomfortable silence, he spoke in a surprisingly commanding tone. Is this how you treat all your visitors, John? Even those who taught you everything you know about the science of success? In a courtroom, I should have kept my trade secrets to myself, he said, his full lips curving into a mighty grin. A strange sensation tickled the pit of my stomach. I immediately recognized that raspy, honey smooth voice. My heart started to pound. Julian, is that you? I can't believe it. Is that really you? Oh my God, what a change, right? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 70, 53 का 70 की उम्र का लग रहा है, wrinkles और एकदम हार्ट अटैक आ गया. एंड अभी ये 3 साल बाद रिटर्न हुआ है. ओके. The loud laugh of the visitor confirmed my suspicions. The young man standing before me was none other than that long lost yogi of India, Julian Mantle. I was dazzled by his incredible transformation. Wow. And a transformation wala book. Gone was his ghost like complexion, the sickly cough, and the lifeless eyes of my former colleague. Gone was the elderly appearance and the morbid expression that had become his personal trademark. Instead, the man in front of me appeared to be in peak health, his lineless face glowing radiantly. His eyes were bright, offering a window into his extraordinary vitality. Perhaps even more astounding was the serenity's peace, calmness that Julian exuded. I felt entirely peaceful just sitting there staring at him. He was no longer the anxious type A senior partner of a leading law firm. Instead, the man before me was a youthful, vital, and smiling model of change. Wow. है ना सस्पेंस, क्या बोलते हैं, सस्पेंस. अभी अभी ये ऐसे लग रहा था, अब ये अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ओके. So how is it? How has he become the model of change? Shall we continue? We have time, right? 10 minutes. Let's start the next lesson. Chapter 3, The Miraculous Transformation of Julian Mantle. I was astonished by the new and improved Julian Mantle. He could somehow, how could someone who looked so tired old man only a few short years ago now look so vibrant and alive? I wondered in silent disbelief. Was it some magical drug that had allowed him to drink from the fountain of youth? What was the cause of this extraordinary reversal? Wow. ऐसे लग रहा है हम भी जाने क्या हुआ. डायरेक्ट 70, 53 का था और अब वो 30 समथिंग लग रहा है. ब्यूटिफुल स्किन एंड ऑल. वाह. लेट्स सी, लेट्स सी. आई वी आर ऑल्सो ईगर टू नो किया क्या उसने, और इंडिया में आके, राइट. तो हमारे लिए तो भाई नामुमकिन नहीं है. लेट्स सी. Julian was the first to speak. He told me that the hyper competitive legal world had taken its toll on him, not only physically and emotionally, but spiritually.
The fast pace and endless demands had worn him out and run him down. He admitted that his body had fallen apart and that his mind had lost its luster. His heart attack was only one symptom of the deeper problem. The constant pressure and exhausting schedule of a world class trial lawyer had also broken his most important and perhaps the most human endowment, his spirit. हमने जाना था ना उसने अपने पिताजी से बात करना छोड़ दिया था, उसकी मैरिज टूट गई थी, डिवोर्स हो गया था. When given the ultimatum by his doctor, either to give up the law or give up his life, he said he saw a golden opportunity to rekindle the inner fire he had known when he was younger. A fire that he had extinguished as a law became less a pleasure and more a business. Action number 2 for the week. क्या है ये एक्शन? आप पता करिए, find out what is your work which you used to love first and now it has become only a what you call just a business, daily business. Okay. So for example, खाना बनाना इतना मजा आता था और अब लाइक चलो भाई काम खत्म करो. Could be any other thing also. ठीक है कि जो पहले करने में आप बड़े पैशनेटली करते थे और अब वो एकदम ही डेली बिजनेस हो गया या शायद आप वो करना भी भूल गए हो. ठीक है. That you have to see. आगे बढ़ते हैं. We still have time. Yeah, we can complete this page. Julian grew visibly excited as he recounted how he sold all his material possessions and headed for India. So हमने पिछले इसमें देखा चैप्टर में कि राइटर को बड़ा दुख हो रहा था. It hurts. बोलता है कि मेरा दोस्त, मेरा मेंटर, और उसने बिना मुझे कुछ बताए छोड़ छाड़ कर चला गया और मुझे हॉस्पिटल में भी उसने मिलने नहीं दिया खुद से. लेकिन अब जूलियन वापस आया है 3 साल बाद और राइटर को अपनी सारी स्टोरी बता रहा है एकदम एक्साइटेड होके. He says that, yeah, he traveled from tiny village to tiny village, sometimes by foot, sometimes by train, learning new customs, seeing the timeless sights, and growing to love the Indian people who radiated warmth, kindness, and a refreshing perspective on the true meaning of life. Even those who had very little opened their homes and their hearts. I'll read this again. Even those who had very little opened their homes and their hearts to this very visitor from the West. As those days melted into weeks within this enchanting environment, Julian slowly began to feel alive and whole again, perhaps for the first time ever since he was a child. He His natural curiosity and creative spark steadily returned, along with his enthusiasm and his energy for living. He started to feel more joyful and peaceful, and he began to laugh again. Although he embraced every moment of his time in this exotic land, Julian told me that his journey to India was more than a simple vacation to ease an overworked mind. He described his time in this faraway land as a personal odyssey to self. He confided that he was determined to find out who he really was and what his life was all about before it was too late. To do this, his first priority was to connect to that culture's vast pool of ancient wisdom on living a more rewarding, fulfilling, and enlightened life. I don't mean to sound too off the wall, John, but it was like I had received a command from within, an inner instruction telling me that I was to begin a spiritual voyage to rekindle the spark that I had lost, said Julian. It was tremendously liberating time for me. The more he explored, the more he heard. Sorry, I am not doing this. Yeah. The more he heard of Indian monks who lived beyond age of 100, the monks who, despite their advanced age, maintained youthful, energetic and vital lives. ये हमें तो पता है ना, हमारे ऋषि मुनि तो हजारों साल जीते थे. तो जूलियन उनसे मिलने आया है इंडिया में. बहुत सारे ऐसे योगीज
जो बहुत सारे 100 सालों तक है लेकिन एकदम यूथफुल लगते हैं, ठीक है, और एनर्जेटिक भी. The more he traveled, the more he learned of ageless yogis who had mastered the art of mind control and spiritual awakening. And the more he saw, the more he longed to understand dynamics behind these miracles of human nature, hoping to apply their philosophies into his own life. We are also excited to know क्या philosophy सीखा है जो रॉबिन शर्मा ने इस बुक में डाली है. ठीक है, तो let us see we can embrace this philosophy in our life also. During the early stages of his journey, Julian sought out many well known and highly respected teachers. He told me that each one of them welcomed him with open arms and open hearts, sharing whatever gems of knowledge they had absorbed over lifetimes spent in quiet contemplation over the loftier issues surrounding their existence. Julian also attempted to describe the beauty of the ancient temples that was strewn across the mystical landscape of India, edifices that stood as loyal gatekeepers to the wisdom of the ages. He said he was moved by the sacredness of these surroundings. Now, thing to contemplate here is every place has a energy. ठीक है. एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं ना, ये बुक पढ़ते वक्त मुझे क्या ध्यान आया कि जगह में हम जहाँ रहते हैं ना वो बहुत मैटर करता है. कोई शहर, कोई प्लेस, ठीक है, ऐसे मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब मेरा कंटेम्पलेशन है, आप अपना जोड़ सकते हो, कि जैसे आई स्टे इन मुंबई. ओके, मुंबई वेरी फास्ट लाइफ. Everybody is running, right from a small child running for the school to an old man running to the park to do yoga, और people जो ऑफिस जा रहे हैं. यहाँ तक कि उस दिन मैं बात की थी मेरे सिस्टर से, मैंने कहा मुंबई ऐसा है कि वहां पर जो बेगर्स है ना उन्हें भी टाइम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठे हो और किसी ने भीख मांगी और आप पर्स खोलने में टाइम लगा रहे हो, बोलते भाई साहब दे, मतलब वो बोलेगा देना है तो दो भाई, नहीं तो छोड़ के उतर जाएगा, अगली ट्रेन पकड़नी है. करेक्ट, वहां ज्यादा लाइक दैट वे कि देखे कितना दे रहा है. ऑन अ लाइटर नोट, व्हाट आई फील इज एवरीबडी इज रनिंग, राइट. सो न चाहते हुए भी जो आपके जो थॉट्स और एनर्जी आप पिक कर लेते हो क्विक होने की, फास्ट होने की. जब मैं कोल्हापुर गई थी, वेरी लॉन्ग लॉन्ग अगो, मैं पढ़ रही थी तब एमकॉम. मुझे ना 11 बजे तक लोग उठते ही नहीं थे यार. मतलब मैं तो उठ के बाहर बैठ जाती थी वरांडे में, देखती थी लोग ना ऐसे वो मूवी में स्लो मोशन में दिखाते हैं, ना हाउ दे शो इन दैट स्लो मोशन, सब है ना, वो स्लो मोशन में दिखाते हैं ना, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं. सो वैसे आराम आराम से बच्चे बैग उठा रहे हैं, आराम आराम से स्कूल जा रहे हैं, आराम आराम से सब्जी वाले आ रहे हैं, मतलब किसी को भी जल्दी नहीं है किसी चीज की. So it was such a contrast, and I was also peaceful there. So what I feel the Julian is telling here is जगह बदलने से ही उसके वाइब्स भी चेंज हो गए. तो many times, see notice, कई बार क्या जगह बदलने से आपके फीलिंग्स बदलते हैं? क्वेश्चन मार्क. करेक्ट, फूड फॉर थॉट. जस्ट थिंक अबाउट इट. यस, आगे बढ़ते हैं. इट वॉज अ वेरी मैजिकल टाइम ऑफ माई लाइफ, जॉन. Here I was a tired old litigator who had sold everything from my racehorse to my Rolex and had packed all that remained into a large rucksack that would be my constant companion as I ventured into the timeless traditions of the East. Was it hard to leave? I wondered aloud, unable to contain my curiosity. Actually, it was the easiest thing I had ever done. The decision to give up my practice and all my worldly possessions felt natural. Albert Camus once said that real generosity towards the future consists in giving all to what is present. Well, that's exactly what I did. I knew I had to change. So I decided to listen to my heart and do it in a very dramatic way. My life became so simpler and meaningful when I left the baggage of my past behind. The moment I stopped spending so much time chasing the big pleasures of life, I began to enjoy the little ones, like watching the stars dancing in moonlit sky,
or soaking in the sunbeams of a glorious summer morning. And India is such an intellectually stimulating place that I rarely thought of all I had left. It's 9:49. Okay, let's read one more paragraph and stop. Those initial meetings with the learned and the scholarly of that exotic culture, though intriguing, did not yield the knowledge for which Julian hungered. The wisdom that he desired and had practical techniques that he hoped would change the quality of his life continued to elude him in those early days of his odyssey. It was not until Julian had been in India for about 7 months that he had his first real break. I think we stop here 9:50, time to discuss. So one action for the week here, it is you have to watch the stars in the night, at least for 3 days, 3 nights, okay? Full week till we meet next day. Stars, तारे गिनने हैं, ओके? और गिनती बतानी है कितने गिने आपने तारे। तो आपके घर से दिख रहा हो तो ठीक है, आजकल मुंबई में तो बहुत मुश्किल से इतना सा स्काई दिखता है, तो उतने ही तारे दिखेंगे। तो यू हैव टू गो टू द ओपन प्लेस, मे बी टेरेस, बिल्डिंग के टेरेस पे या कहीं और नाइट वॉक पे जा सकते हैं। और या आई व्हाट वी कैन डू इज यू हैव टू यू कैन गो ऑन अ नाइट वॉक एंड वॉच द स्टार्स। ओके, ये एक आपका एक्शन है फॉर द वीक। अनदर एक्शन फॉर द वीक इज whenever you go in the past. Oh, one more about the morning sun. 10 minutes till next time. Soak yourself in the sunlight. Morning sun, huh? India का sun बहुत strong है. 7 morning sun. You get time, don't get time because my job is such. I don't get to be in the sun, but yes, I will do. I know how I will do. 10 minutes in the sun, morning sun, night stars. Okay. And another action, fourth action is action for the week is whenever you go in the past, note down what lesson you learned from it. बैठे बैठे अगर कुछ याद आ जाता है ना, पास्ट में चले जाते हैं। यस और नो, रेज हैंड, कितने जन चले जाते हैं बैठे बैठे पास्ट में? कुछ दिखा तो पुरानी बात याद आ गई, अच्छी बुरी जो भी बात याद आ जाए, पहला क्वेश्चन खुद को पूछना है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट? ठीक है, तो अगर आपको किसी की दुख भरी बात याद आ रही है, देख उसने मुझे ऐसे किया था, उसने सबको बुलाया था पार्टी पे, मुझे ही नहीं बुलाया था। ठीक है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दैट इज द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर immediately. Okay, so let's stop here now and let's open up if you have anything to share or you have to ask anything. Floor is open till 10 o'clock. Yes, so you all can unmute yourself and share. कुछ बोलना है कुछ? Okay, how is the reading and all? Is it okay? Are you able to understand? Or you want me to go a little slower? How is it? Answer it. You can